Freezing point. Freezing point and melting point of water both are the same one. Substances can freeze or melt at the same temperature depending on whether the substance is gaining heat energy or losing heat energy. Freezing point of a water. It is the temperature at which liquid and solid coexist in a state of dynamic equilibrium with one another, and this is called the freezing point of a liquid. Here we are watching the freezing point of a water. We put some water into this glass and heat it. When we check the temperature, the water in a solid state and liquid state, they are in equilibrium to each other. This is called the freezing point of the water, and now we are measuring the temperature. What is the temperature of the water and ice? We are watching the freezing and the melting temperature of ice is equal to 0 degrees Celsius. This is an experiment which we can do in at our home easily. So when I did this experiment, it is clearly indicating that at a freezing point of water, 0 degrees Celsius is the temperature which we can watch and look clearly. Is it clear? I hope that now you are able to understand what is the freezing point. Now we will study freezing point. The temperature at which the solid and liquid state of a substance coexist in डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. वो दर्जा हरारत जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों तवाज़ुन की हालत में हो, लेकिन तवाज़ुन कैसा? मूविंग इक्विलिब्रियम में. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मूविंग इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज, द लिक्विड विल फ्रीज टू सॉलिड. जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. Thus, freezing point of a liquid is the temperature at which the solid and liquid state of a substance coexist. इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो दर्जा हरारत है जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों तवाज़ुन की हालत में होते हैं. एट द फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हैव द सेम वेपर प्रेशर. सॉलिड और लिक्विड जब दोनों फ्रीजिंग पॉइंट पर तवाज़ुन की हालत में होते हैं तो उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर दोनों का कांस्टेंट रहता है. बच्चों, हमने बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखा है. अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें शामिल है, ये एक टेबल है जिसमें हम वॉच करते हैं फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेबल फॉर सम इम्पॉर्टेंट लिक्विड्स. For example, diethyl ether freezes at a temperature minus 116 degrees Celsius and boiling point is 34.6 degrees Celsius. Ethyl alcohol is a liquid. It has a freezing point minus 115 degrees Celsius and boiling point is 78 degrees Celsius. Water has a freezing point 0 degrees Celsius and boiling point 100 degrees Celsius. N-octane has a freezing point minus 57 degrees Celsius and boiling point 126 degrees Celsius. Acetic acid has a freezing point 16.6 degrees Celsius and boiling point 118 degrees Celsius. बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सी वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं. बॉइलिंग पॉइंट में से दो कॉमनली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन with the help of a graph. There is also the possibility of a long question, boiling point with the help of a graph, and also the factors affecting the boiling point. और freezing point की तो कॉमनली डेफिनेशन आती है. बच्चों, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं. मैं मौजूद हूँ, आप क्वेश्चन पुट करें. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई.